ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे शॉर्ट डिस्कशन एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जो मौका दिया। मैं आपको बताता चलूं कि एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जैसा करीब 9 साल होने को आ गए हैं तेलंगाना बन के, मगर आज तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है, तेलंगाना के साथ जो प्रॉमिसेस किए हैं, आज तक उस प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करे हैं सर। ये चीज़ आप देखिए, क्योंकि एक और साल जाने के बाद 10 साल हो जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो एपी के जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो लोग भी चले जाएंगे, मगर तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है सर। अंडर द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनकॉर्पोरेटेड सेवरल provisions for setting up educational and infrastructure facilities in Telangana apart from Andhra Pradesh. This provision, by the way of the assurance, related to the establishment of the tribal university in Telangana, sir. Setting up the integrated steel plant in Khammam district, sir. Establishment of a 4,000 megawatts power plant under NTPC. Setting up a rail coach factory in Telangana, sir. And improvement of the road connectivity under NHAI and rail connectivity in the state, sir. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, ये सब चीज़ के बावजूद भी आज तक के सेंट्रल गवर्नमेंट जो चीज़ करना चाहिए अभी तक नहीं करी सर। However, even after the 8 years is completed since the formation of Telangana state, the central government is refusing to fulfill this assurance contained in the AP Reorganization Act, sir. On the other hand, the central government is trying to harm the interest of Telangana by seeking to privatize some local blocks of Singarani collieries, pressuring in the state of privatize the nationalized bus route operated by a TSRTC, and also gaining control over the all irrigation and power project of the state, sir. Section 93 of the Reorganization Act clearly mandated that the union government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule of the progress of the sustainable development of the successor state within the period of 10 years, sir. The central has failed completely in resolving them. Under the AP Reorganization Act, 91 institutions are inducted in a Schedule 9 and 142 institutions are included in the Schedule 10. Sheila Binde Committee constituted by the United AP has submitted a report on the division of 90 institutions under Schedule 9. There is a difference of the opinion regarding the division of the headquarters in respect institution listed under Section 9 between AP and Telangana, sir. तो मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं सर कि जहां तक हो सका सेंट्रल गवर्नमेंट जो तेलंगाना को देना चाहिए वो अभी तक नहीं दी। यूनियन होम मिनिस्टर गेव क्लियर इंस्ट्रक्शन on this issue in 2017. As per the instruction, the place where the main office of the institution is located should be treated at headquarters. This definition should be taken into account for the purpose of division of the asset. The union government failed to enforce ministry direction with regards of the division of the asset under Schedule 9 and 10, sir. Sir, मेरा आपके जरिए से ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऑल पार्टी मीटिंग कंडक्ट करते हुए सर एक डेलीगेशन को सेंटर ले जाके वहां पे आज जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है एपी रेगुलेशन एक्ट के ऊपर, उसको लाना जरूरी है सर। उसके अलावा सर द 13 शेड्यूल अंडर सेक्शन 93 के अंदर सर एजुकेशन पर्पस के लिए जो कहा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल टेक स्टेप टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन of national importance in the 12th and 13th plan periods in the successor state of Andhra Pradesh. This would include one IIT, one NIT, one IIM, one IISCR, one Central University, one Petroleum University, one Agriculture University and one IIIT, sir. अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एस्टैब्लिश वन AIMM super specialist hospital come teaching institution in the successor state of Andhra Pradesh, sir. Sir, the government has established
a tribal university each in the state of Andhra and in the state of Telangana, sir. A horticulture university shall be established in the successor state of Telangana, sir. Sir, the government of India shall establish the National Institute of Disaster Management in the successor state of Andhra Pradesh, sir. Sir, SAIL shall examine within the 6 months from the appointment day the feasibility of establishment and integrated steel plant in Khammam district of the successor state of Telangana, sir. Sir, NTPC shall establish a 4,000 megawatt power facility in the successor state of Telangana after establishing necessary coal linkage, sir. Sir, Indian Railway shall within the 6 months from the appointment day examine establishment a new railway zone in the successor state of Andhra Pradesh and take the expenditure decision thereon, sir. NHAI shall take necessary step to improve road connectivity in the backward region of the successor state of Telangana, sir. The Indian Railway shall within the 6 months from the appointed day examine the feasibility of establishment a rail coach factory in the successor state in Telangana and improve rail connectivity in the state and take the expenditure decision thereon, sir. Sir, the central government shall take measure to establish rapid rail and road connectivity from the new capital of successor state of Andhra Pradesh to Hyderabad and other important cities in the Telangana, sir. सर, तो मेरा आपके जरिए से हुकूमत को ये मुतालिबा है, ये तमाम चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको प्रॉमिस करके जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहे थे सर, ये सब गैप है. हम इसके लिए किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से निकालना चाहिए और अवाम को तेलंगाना की ये बताना चाहिए कि हमारे साथ जो स्टेप मदर ट्रीटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रही है उसको भी आवाम की रोशनी में लाना चाहिए. मैं हुकूमत से मुतालिबा करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे और प्रॉपर रिप्लाई देंगे. थैंक यू सो मच सर.